Hello students, we are given a question on combination of lens and mirror, and in the question we can see that a thin convex lens of refractive index 1.5 is placed on a plane mirror M. When a pin is placed at A such that OA is 18 cm, its real inverted image is formed at A itself, as we can see in the figure. Now, when a liquid of refractive index mu is put between the lens and mirror, then the pin has to remove to A dash such that OA dash is 27 cm to get the inverted real image at A dash itself. The value of mu1 is asked in the question. So for solving this problem, we need to see that when the lens and a mirror is in combination and the object is placed in front of it, then at that situation this length is R. So, and this is a thin lens, so this R1 and R2 will not change and it will be 18 centimeter only. So this is the first case situation we have. Now, applying the lens making formula, that is 1 upon F is equal to mu minus 1 upon R1 minus 1 upon R2. Now mu we have 1.5 of the lens minus 1 and R1 value is 1 upon 18 minus 1 upon, this is the another side radius of curvature of that lens, so it will be minus 18 as per the sign convention. So we are getting the value 0.5 into, this will be 2 upon 18. So we can also write this 1 upon 2 into 2 upon 18. So we are getting 1 upon 18 of the value 1 upon F. This is for the first case for the lens. So we are writing this as F1. So we are getting the value of F1 to be 18 centimeter only. Now, for the second situation, when the liquid is introduced here, as the liquid is introduced, liquid has two curvatures and those curvatures are, this is R1, this R1 will be same because the liquid will take the shape of that lens, so it will be 18 centimeter. Now if I talk about this curve, it will take the shape of mirror which is completely horizontal flat, so its R2 will be infinite. Now we will use the formula for finding the value of focal length for the second case when the liquid is introduced, which is 1 upon F2 is equal to mu1 minus 1. This we are talking about liquid only, and the R1 and R2 value are 1 upon R1 minus 1 upon R2. Mu1, we are not given the value, we need to find that value, and this value is given as 1 upon 18 minus 1 upon infinity.
this 18 will be negative because this R2 of the first case was negative this. So on solving, we are getting 1 upon F2 is equal to mu1 minus 1 upon minus 18. This is the value of 1 upon F2. Now we are talking about the combination. So we very well know after the combination of the lens as well as the liquid, we see that this is the distance of the new shifting of pin and its respective image at that same position. So we have the value of the combination of focal length as 1 upon F1 plus 1 upon F2, and the combination of this 1 upon F is 1 upon this length which we have found, and this length is 27 centimeter is equal to 1 upon F1 which is 18, and this minus will come this side, so it will become minus mu1 minus 1 upon 18. So when we will solve this, we will get the value as 1 upon 27 equal to 2 minus mu1 upon 18. So we get 2 minus mu1 equals to 18 by 20. Now 2 minus mu1 is equal to 2 by 3. So this will be mu1 is equal to 2 minus 2 by 3, which is equal to 4 by 3. So mu1 is equal to 4 by 3, and option A is the correct answer of this question. Thank you. Hello everyone. Here the question says that a convex lens of focal length 20 cm produces an image of same magnification 2 when an object is kept at distance x1 and x2, where x1 is greater than x2 from the lens, the ratio of x1 and x2. So in this question we need to find out the ratio of the object distance which produces same magnification of image, which is 2. So we need to find out the ratio of x1 and x2. So we know that the convex lens produces both virtual and real image. So first we will find out so x1 is greater than x2. So x1 is the object object distance which produce a real image. So this is an object distance which produce a real image. So we will use this x1. So we know that the magnification formula is m equal to minus b by u, and m is given 2. So the image will be minus b by x1 distance is minus x1. Therefore b equal to 2x1. Now we will use the lens formula, that is 1 by b minus 1 by u equal to 1 by f. So we have b, that is 1 by 2 x1 minus u1. So we have the u, that is minus x1,
minus x1 equal to, let's say the focal length is 20, so it is f here. Now if we sum this, 1 by 2 x1 plus 1 by x1 equal to 1 by f, therefore it will be 3 by 2 x1 equal to 1 by f. So from here the value of x1 will be 3f by 2. So 3f by 2. So this is when the object is placed at x1 distance and produces the real image. Now the object x2 which produce a virtual image. So the magnification is again the 2 equal to v by u. So it produces a virtual image. So it will contain here minus sign and the minus v by u, that will, so x2, so putting the value minus 2 minus b and u here is x2 minus, so the v is equal to minus 2x2. Now we will again use the lens formula to find out the value of x2, that is 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. So 1 by v, 1 by minus 2x2 minus minus of x2 equal to 1 by f. So this side 1 by minus 2x2 plus 1 by x2 equal to 1 by f. So from here it will be x2 equal to 1 by 2 x2 equal to 1 by f. So therefore x2 equal to f by 2. So we need to find out the ratio. So we have calculated the x1, which is x1 equal to 3f by 2 and x2 equal to f by 2. So taking the ratio, that is x1 by x2, which is equal to 3f by 2 divided by f by 2. So 2 f and f get cancel out. So x1 by x2 equal to 3 by 1, that is the ratio is 3:1. Now let's check which option it matches. So the correct answer is B, 3:1. Hope you guys understand. Hello guys, in this session we are going to discuss a problem of JEE main exam. So question given to us is, what is the position and nature of image formed by lens combination shown in figure? F1, F2 are focal lengths. So there are two lenses. Let us say this is lens number 1 and we name it as L1, and this is lens number 2, we name it as L2. Separation between the center of these two lenses is 2 cm. Focal length of lens 1 is 5 cm as it is given positive. इफ इट वॉज नॉट गिवन तो भी हमें कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव ही लेना है और कॉन्केव लेंस का हमेशा फोकस लेंथ नेगेटिव लेना है. तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड -5 सेंटीमीटर. जो ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड है वो कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर अवे प्लेस्ड है. तो हमें ये बताना है कि फाइनल इमेज जो होगी इस ऑब्जेक्ट की ओ पे जो रखा हुआ है, ठीक है, उसकी कहाँ पे बनेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है. सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज निकालनी है L1 के लिए, ठीक है. लेंस 1 से जो इमेज बनेगी वो इमेज L2 के लिए, लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फिर उससे फाइनल इमेज निकालेंगे हम लेंस 2 के लिए और वो कॉम्बिनेशन से जो इमेज की डिस्टेंस आएगी वो फाइंड हो जाएगी हमें, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले लेंस 1 के लिए, L1 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि आपका सीधा सीधा लिख सकते हैं आप 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f.
V, U और F को हमें साइन के साथ रखना है। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, V फाइंड करना है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/V इज इक्वल्स टू 1/F प्लस 1/U, और वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन एज UF अपॉन U प्लस F और U को हमें साइन के साथ रखना है। तो U क्या है, देखो जब भी जो रे है वो उसकी डायरेक्शन में जाते हैं, हम सारी जो डिस्टेंसेज हैं हम पोल से कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम रेज की डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव लेते हैं डिस्टेंसेस को। तो ये जो O पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे इससे रेज कैसे निकलेंगी, इस तरह इस डायरेक्शन में निकलेंगी, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करने के लिए पोल से इधर जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट प्लेस रखा हुआ है जिस डिस्टेंस पे, यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ लेंथ 1 है, वो क्या है, वो है -20, क्योंकि इससे रेस इस डायरेक्शन में निकल रही हैं और हमें कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। तो -20 आ गया U, F ऑलरेडी दे रखा है +5। तो हम निकाल सकते हैं V की वैल्यू -20 इंटू 5 डिवाइडेड बाय -20 प्लस 5, ठीक है। फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही है कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये हो गया -100 डिवाइडेड बाय -15। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड इट कैन कम आउट एज 20/3, ठीक है। तो 20/3 सेंटीमीटर पे क्या बनेगा, पहला इमेज बनेगा लेंस 1 से जाने के बाद। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि 20/3 जो है ये क्या है, आपका पॉजिटिव आया है, ठीक है। पॉजिटिव आया है 20/3, तो इसका मतलब जो लेंस 1 है उसके पोल से हमें किधर जाना पड़ेगा, राइट में जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सारी रेज ऐसे जा रही है, राइट में जा रही है, तो राइट में पॉजिटिव होगा पोल से और लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पोल से 20/3 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और वहां पे पहली इमेज बन रही है, और जो आपका दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन है वो है 2 सेंटीमीटर। चलिए एक बार हम इसका फिर से डायग्राम बना के और अच्छे से समझ लेते हैं। ये पहला लेंस है हमारा, लेंस 1 बोल देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमारा दूसरा लेंस रखा हुआ है, इसको लेंस 2 बोल देते हैं, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, ये इनकी सेंट्रल एक्सिस है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था कोई, लेट अस अज्यूम, ठीक है। O पॉइंट पे डिस्टेंस थी 20 सेंटीमीटर, और दोनों मिरर लेंस के बीच की डिस्टेंस थी 2 सेंटीमीटर, और जो इमेज बन रही है वो बन रही है 20/3, यानी कि ऑलमोस्ट 6.66 सेंटीमीटर पे, 20/3 अवे फ्रॉम L1, ठीक है। तो यहाँ से 20/3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से 20/3 है, तो इस वाले लेंस के लिए L2 के लिए ये इमेज क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब इस इमेज की डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करनी है L2 से, तो कैसे फाइंड करूंगा, सीधी 20/3 -2, यानी कि 14/3, ओके। अब हमें लेंस 2 के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, लेंस मेकर फॉर्मूला अगेन, जिससे हम फाइनल इमेज की पोजीशन फाइंड कर पाए, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला वही है, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F, ठीक है। अब इनको साइन के साथ रख देते हैं, V हमें फाइंड करना है तो 1/V एज इट इज, ठीक है। और U की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/3, यानी कि 1/14/3 इज इक्वल्स टू 1/-5 गिवन है, ठीक है। देखो 14/3 पॉजिटिव इसलिए क्योंकि सारी रेस इस डायरेक्शन में जा रही हैं और हमें इस पोल से इस तरह जाना पड़ रहा है लेंथ को, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/V की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी -1/5 प्लस 3/14, ओके। तो इसको और आगे सॉल्व करने पे 1/V इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 70 एंड इट बिकम्स -14 प्लस ये हो गया 5 टाइम्स तो 15, ठीक है। तो आ गया आपका 1/70। तो 1/V की वैल्यू आ गई 1/70, तो V की वैल्यू आ गई ऑब्वियसली 70 सेंटीमीटर, यानी कि 70 सेंटीमीटर पे जो फाइनल इमेज है वो आप ट्रेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन के थ्रू आप पता लगा सकते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, विच इज 70 सेंटीमीटर फ्रॉम B पॉइंट एट लेफ्ट
तो 70 सेंटीमीटर कहाँ बनी है, पॉजिटिव आ रहा है 70 सेंटीमीटर, और हम पोल से हमेशा राइट में क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव ले चल रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में गिवन है कि 70 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एट राइट। तो ये बात तो सही है कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो बिल्कुल करेक्ट है, 70 सेंटीमीटर में राइट में बनेगी इमेज। अब ये रियल होगी या वर्चुअल कैसे पता चलेगा, देखो देखो लेंस से हमेशा क्या होता है, लेंस कोई भी हो, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में मान लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका हमेशा इमेज लेंस के जो पोल है उसके अपोजिट साइड में बन रहा है, तो आपकी हमेशा इमेज क्या होती है, रियल होती है। और अगर उसका ऑब्जेक्ट का इमेज उसी डायरेक्शन में बना जहाँ पे वो रखा हुआ है तो वो वर्चुअल होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, 70 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी एट राइट एंड रियल इमेज। थैंक यू।